आके एक के सुने दिन में 50 के सुने, हमारी मर्जी है, ठीक है। नहीं, सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं। हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे। तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है, अब सीधी सादी बातें करें। केसेस में हमें उलझा करके घंटों चल रही है बहस। मतलब frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence of the judiciary. Yes, if that principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course, then Section 2 goes. But I don't think if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the committee. And it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He's one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult one, which is, and Justice Shahid had asked a very important question about framing rules, framing rules. And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have a look at that. But I'll move on to the second. But that's a very important question. There is no provision which says that rules should be framed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your Lordships to read down. This is the only provision. Which is section? Section 3, sir. 3. What Section 3 does is that it says that there is this committee will at an initial stage look at whether these petitions are maintainable, whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it or not? Now, this is clearly, as His Lordship Justice Mansoor has held, this is clearly a judicial adjudication. And this committee is really acting on the administrative side. It's obvious from the language of this provision. Now, there is nothing unusual, of course, about this initial, examination of these. The US Supreme Court does this. There is no hearing, there is no reasons at the leave granting stage. So the real problem is not that. The real problem is... There is a problem here. With all due respect, your analogy is wrong. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of the 9 judges, yes, at least 4 must agree to hear the case. That case goes to full hearing. But this scrutiny that you're talking about, that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. That is committee, because they all sit en banc. No, sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. No, that is not the problem with Section 3. Sir, मैं वही तो बता रहा हूँ. Your Lordship is saying that when those 4 judges sit, No, it's not the 4 judges. They have what are called conferences. I think every second Saturday they have a conference in which all 9 judges sit, and the cases are put up in conference. Any case that musters 4 votes, yes, out of the total 9, yes, it's not a committee of 4 that sits. All 9 sit. The full court sits, what we would call the full court. That sits, and if 4 out of those... and 5 when there is a grant of a stay order. Sorry? And 5 when there is a stay order. Yes, yes. आप तो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं ना? जी. तो अगर 4 जो हैं वो नहीं, 4 वोट उसको नहीं पढ़ते, what they call cert denied, ठीक है? So it's not that there's a separate committee. Whatever they do, because they have their own, because they always sit en banc. यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि 3 जो, what my learned colleague Justice Mansoor Ali Shah has stated in a very clear statement of principle, that the power of adjudication cannot be in the hands of any administrative committee. The context in which my learned colleague gave judgment was registrar, but as a matter of principle, with all due respect, it doesn't matter whether it's a committee, no matter how eminent or senior those judges are, the problem remains the same. So the US example, I'm sorry, is not... Sir, I was giving it for a different reason. If your Lordship आप ये भी बता दीजिए कि
अगर हम देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क के एग्जांपल्स हम देते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 120 केस से सालाना फैसला होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो फिर नंबर्स हमें दें। हमारा सिस्टम बिल्कुल फ़र्क है। हमारे सिस्टम में हर कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं आता खुश नहीं होता है, या CPLA में आएगा या सिविल अपील में आएगा। वहाँ ये सिस्टम है ही नहीं, बहुत कम केसेस होते हैं। तो अगर आप हर केस पे बैठ करके फुल कोर्ट ये तयन कर सकता है, ये वाले सुन लें ना सुन लें, तो आप ये सारी बातें फिर बताइए ना। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूसरी जगह से लगाना है तो फिर अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड पेयर्स विद पेयर्स। ये तो नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल ले लें और उधर तो जी 120 केसेस हैं। अच्छा 120 केसेस में अगर पूरा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बैठ के तयन भी कर ले तो कितना वक्त लगेगा? आप बैठ करके 56,000 केसेस को तयन कर लें, वो बात ही नहीं होगी, वो अलग बात है। तो ज्यादा होते हैं जी। Let me clarify. आप बताइए। Cases run in several thousand. जी several thousand. Out of those only जी 100 or हमें odd देखिए जो चीज़ हमारे pass पास the rule है of नहीं, law. मुझे नहीं पता। अगर आप कोई चीज़ फाइल करें हम पढ़ लेंगे Sir, उसको। the only reason I cited that, I agree with you. जो है सुप्रीम कोर्ट की विकिपीडिया पे I पेज है। agree. I actually agree with you. What I'm citing it, the problem with the provision is not that reasons are not given or there is no hearing. The problem is this maintainability adjudication cannot take place on the administrative side by even a committee. आप रिपीट कर रहे हैं जी। बार बार। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? रीड डाउन करें। इसको रीड डाउन कर दें और रीड डाउन इस तरह करें कि the scrutiny may take place, but whatever the petitions are should be put up with the scrutiny report to a judicial bench. This is the way to say ये सिर्फ ये आपको करना है और not maintainable. वकील साहब आपने सेक्शन 3 पढ़ा नहीं है जी। उसका आखिरी पार्ट पढ़ें। जी आप जो रिपोर्ट की बात रीड डाउन करने की कर रहे हैं जी। इस सेक्शन का आखिरी पार्ट पढ़ें। Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 or Part 2 of the Constitution involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the committee for adjudication of the matter. आप जो बात कर रहे हैं ना अगर कमेटी हो तो ये आखिरी वर्ड्स जो हैं they would need to be eliminated. No. Obviously No. committee so the three member committee वो इसको scrutinize करे. Yes. Say not maintainable, puts it up before a 5-member judge of which No, why 5-member bench? 3-member bench? अभी सिर्फ ये वो केसेस पुट अप करेंगे से मेंटेनेबल फिर नहीं। यस ये तो हर सर चेंबर में अपील जाती है, इनिशियली एक डिसाइड होता है मेंटेनेबिलिटी का इशू, दैट डजंट बार द कोर्ट फ्रॉम डिसाइडिंग द मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन इट इज पुट बिफोर अ जुडिशियल सवाल बेंच। जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि अगर फर्ज करें ये कह दें कि नॉट मेंटेनेबल, Yes. देन व्हाट वुड बी द रेमेडी अवेलेबल टू द No. एग्रीड पर्सन? अगर वो कह देते हैं नॉट मेंटेनेबल, आई वुड से दिस इज व्हाट योर लॉर्डशिप हैज। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो मेंटेनेबल होगा वो बेंच के पास नहीं जाएगा, नहीं, अगर फर्ज करें वो नेगेटिव में उसका वो आप कर जो दें, read तो down फिर भी बेंच के ऊपर पास जाएगा सर। कोई जजेस नहीं जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? सर यही तो रीड इन करना है, यही रीड इन करना बात है, सुने उसमें ये भी लिखा यही हुआ है रीड इन करना है। That is- which may include members of the committee. Yes. So notionally it can go before the same judge Yes. again, Yes. and this time you would expect them to hold that it is maintainable. सर फिर तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, मगर दूसरी बात है कि अगर ये I कानून think there's a simple अगर solution to this. देखिए उसको सॉल्यूशंस ढूंढने से पहले जो मौजूदा निज़ाम है इस कानून को एक तरफ रख दीजिए। तो इस मौजूदा निज़ाम में कैसे होता है देखिए साहब, इधर भी थोड़ी सी Sorry, तवज्जो दे दें कभी कभी। नहीं सर आप प्लीज शर्मिंदा पे शर्मिंदा नहीं तो आप देख कहीं और रहे हैं, तो जरा ये देख लीजिए मौजूदा निज़ाम में अगर ये एक्ट तसव्वुर कर लें कि नहीं है बना, अब 184 की आई थिंक, अब तो वो ब्रांच में लिखेगा नॉट मेंटेनेबल, यही लिखेगा ना, या पुट अप कर देगा कोर्ट में या लिख देगा, फिर उसकी करेंगे चेंबर अपील, ठीक है, फिर जज कह जाएगा द ऑब्जेक्शंस आर सस्टेन्ड और ओवररूल्ड। तो ये
ये कहना कि ये जो निज़ाम आया है ये मौजूदा निज़ाम से ख़राब है तो एक अलग बात है। नहीं, ये मौजूदा निज़ाम से बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट अभी तो वो इख्तियार सारा उसके पास बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्रार खुद भी नहीं कर रहा है, वो कोई सब डेलीगेटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है जो पता नहीं जो पिटीशन एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत से लोग शायद अपील भी ना करें, वो भी चेंबर अपील है, वो अगेन वही जज अगर चेंबर अपील में उसने सपोज कह दिया वो कल बेंच में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक और चीज तरह की नजर से देख रहे हैं, अब बेंच में बैठ के दूसरी नजर से देख रहे हैं। All cases which go through scrutiny should be put up before a judicial bench. What is the issue? फैसल साहब ये बताइए, What is the issue? फैसल साहब ये बताइए, क्या जो इसकी डिफिकल्टीज यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रही हैं, आर वी empowered under Article 191 to amend our rules accordingly and remove these difficulties? The power vests in us. बिल्कुल. So there, I don't see any difficulty I or don't problem in see this. how this provision is a threat to the independent. If all cases after scrutiny are put before a judicial bench. मिस्टर फैसल यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए। 191 के तहत अगर फुल